Question number 1. In which form is data transmitted in a digital signal? Try karantu. Which option hebo yaro right answer? Digital signal re data transmitted keun form re hue? Binary digits ro form re hue. That is 0 and 1 ro form re hue. Option C is your right answer. Next. Which signal has the characteristics of both analog and digital signals ro? Analog and digital signals ro characteristics rahibo, that is hybrid signal re. Okay, it means kono analog ta apanଙ୍କର continuous and digital ta discrete, right? Hybrid signal habo right answer. Or jodi option re mixed signal rahibo, that is also right answer habo. Next, what is the role of the sender in data communication? Data communication re sender ro bhumika kono? Sender ro bhumika ହେଉଛି transmit data over a network. Option C is your right answer. Next, which of the following is not a component of data communication? Data communication ro component hebo nahi. देखंतु firewall गोटे data communication रो component ही परिबो नाही. Next, which communication channel supports data flow in only one direction? Data flow टा कोन हबो? Only one direction रे, that is data flow रहिबो. सेही प्रकार रो communication channel को कहा जाय simplex. Option C is your right answer. Next, which of these is an example of half duplex communication system? Half duplex टा कोन? Walkie talkie ही परिबो. Okay, both way communication हबो, but one person at a time, that is walkie talkie is your right answer. Next, which cable is commonly used in local area networks? LANs को है. Local area networks रे twisted pair cable को use करा जाए. Option B is your right answer. Which cable is best suited for long distance high speed data transmission ପାଇଁ? Long distance रहिथिबो, high speed रहबो and data transmission करिवो, सेथि ପାଇଁ केउ प्रकार रो cable best suited अटे? That is होची fiber optic cable. Option C, fiber optic cable have right answer. Next, what is the frequency range of radio wave transmission? Try करंतु परीक्षा राशि पारे रेडियो वेव रो जो ट्रांसमिशन रहिची तार फ्रीक्वेंसी रेंज टा केते? 3 किलोहर्ट्ज टू 300 gigahertz. Option C हेबो यार right answer. Next question. Question number 10 try करिबा. Which transmission medium is best suited for satellite communication? Try करंतु satellite रो communication ପାଇଁ. Okay, ताहले which transmission medium ता suitable रहइबो satellite communication ପାଇଁ? Radio frequency medium. Next, which of the following is the short range wireless communication technology? Bluetooth, right? Bluetooth gote short range ro kon hi jibo wireless communication technology ote. Next, in which communication channel can both device transmit and receive at the same time? Transmit and receive karibo same time simultaneously, that is about full duplex. Option C, full duplex is your right answer. What is a computer network? गोटे computer network कौन ही परिबो? Try करंतु question number 13. गोटे computer रो network कौन ही परिबो? Network we know जेते बेले computer interconnected हेबे then गोटे network form हुए. तो option C ठीक लागुची. A collection of computers connected to their resource is your right answer. Next question. Who developed ARPANET, the first computer network? प्रथम computer network ARPANET को किए develop करथिले? Vint Cerf is your right answer. Option C is your right answer. Next, what is the main benefit of a computer network? But a computer network रो मुख्य benefit कौन ही परिबो? Sharing resource and communication. ठीक अछि, network जरिया रे आपण resource को share करिवा सहित communicate करि परिबे. Next question, which of the following is not a benefit of computer networks? Try करंतु
इट मीन्स गोटे कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा दैट इज बेनिफिटेड नुह देखंतु इट जदि आपण देखिबे सॉफ्टवेयर रो डिबगिंग टा बेनिफिट हे परिबो नाही गोटे कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा नेक्स्ट व्हिच नेटवर्क टाइप इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स within a city which network type is used to connect computers within a city means आपण कोनसे एक सिटी मध्य रे राइट गोटे कंप्यूटर को कनेक्ट करिया पई चाहंती ताले केउ नेटवर्क यूज करिवे दैट इज आपण मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज योर राइट आंसर ओके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज योर राइट आंसर मन रखंतु मेन नेक्स्ट क्वेश्चन which of these is a personal area network PAN technology ट्राई करिवा निम्नोक्त मध्यरु केउंटा एक PAN टेक्नोलॉजी रो नेटवर्क अटे दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क होची आपनकर ब्लूटूथ ओके ऑप्शन सी ब्लूटूथ हेबो यार राइट आंसर ब्लूटूथ हेउची पर्सनल एरिया नेटवर्क क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन which network type connects computer across continents आपण कंप्यूटर को across continent रे कनेक्ट करि परिबे दैट इज कोन इंटरनेट वन हेबो ओके ऑप्शन बी वन इज योर राइट आंसर यार बेस्ट एग्जांपल होची इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए रिपीटर इन ए नेटवर्क गोटे नेटवर्क रे रिपीटर रो काम कोन हबो गोटे नेटवर्क रे रिपीटर रो काम होची एहा पुट्स वीक सिग्नल ठीक अछि रिपीटर रो काम होची सिग्नल को पुट्स करिवो सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द की फंक्शन ऑफ ए हब इन नेटवर्किंग गोटे नेटवर्किंग क्षेत्र रे हब ओके गोटे नेटवर्किंग क्षेत्र रे की फंक्शन कोन रहइबो कहारो हब रो काम होची ब्रॉडकास्ट करिवो डाटा टू ऑल पोर्ट्स को ऑप्शन सी हबो राइट आंसर ब्रॉडकास्ट डाटा टू ऑल पोर्ट्स इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन which device connects different network protocols which device connect karibo different network protocols को that is होबो आपनकर गेटवे ऑप्शन सी गेटवे इज योर राइट आंसर नेक्स्ट व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए रूटर गोटे रूटर रो पर्पस कोन गोटे रूटर को यूज करा जाय रूटर रो काम होची डायरेक्ट नेटवर्क ट्रैफिक टू डेस्टिनेशन इट मींस कोन करिवो डाटा को डायरेक्ट करिवो गोटे नेटवर्क ट्रैफिक भाव रे काम करिवो तो ऑप्शन बी हेबो यार राइट आंसर नेक्स्ट व्हिच डिवाइस फिल्टर्स डाटा ट्रैफिक एट ए नेटवर्क बाउंड्री व्हिच डिवाइस फिल्टर्स डाटा रो ट्रैफिक को एट ए नेटवर्क बाउंड्री रे दैट इज कॉल्ड ब्रिज that is called what bridge option C is your right answer next question what does a modem do modem we know that is modulation and demodulation रो काम करिवो एही modem रो काम होची modulates and demodulates signal okay that is called analog को digital रे and digital को analog signal रे convert कराए next which topology connects all nodes to a single communication link केउ टोपोलॉजी कनेक्ट करिवो समस्त नोड को गोटे सिंगल कम्युनिकेशन लाइन रे दैट इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी इज योर राइट आंसर व्हिच टोपोलॉजी कनेक्ट्स ईच नोड टू एवरी अदर नोड रे ओके एटा हबो आपनकर मेश टोपोलॉजी ऑप्शन सी मेश टोपोलॉजी इज योर राइट आंसर व्हिच टोपोलॉजी इज ईच डिवाइस कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब ओके केउ टोपोलॉजी रे प्रत्येक डिवाइस कनेक्ट करिवे गोटे सेंट्रल हब रहइबो दैट इज होबो आपनकर स्टार टोपोलॉजी ओके ऑप्शन सी स्टार टोपोलॉजी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिंग टोपोलॉजी गोटे रिंग टोपोलॉजी रो की कैरेक्टरिस्टिक्स कोन हे परिबो रिंग टोपोलॉजी रो गोटे की कैरेक्टरिस्टिक्स होची डाटा फ्लोस इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स डाटाटा गोटे टोकन रो फॉर्म रे डाटा फ्लो करिवो नेक्स्ट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्री टोपोलॉजी गोटे ट्री टोपोलॉजी रो स्ट्रक्चर कोन हे परिवो ट्री टोपोलॉजी रो स्ट्रक्चर होचे हा इन्वर्टेड ट्री विथ रूट एज ए सर्वर भाव रे काम करिवो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट इन ए पीयर टू पीयर जाको P2P कहै जाय पीयर टू पीयर नेटवर्क रे ईच कंप्यूटर कैन एक्ट एज कोंतु
पीयर टू पीयर नेटवर्क रे प्रत्येक कंप्यूटर गोटे काम करिवो बोथ सर्वर एंड क्लाइंट भाବରେ काम करिवो ऑप्शन सी बोथ सर्वर एंड क्लाइंट भाବରେ काम करिवो मन रखंतु नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए क्लाइंट सर्वर मॉडल निम्नोक्त मध्यरु केउटा एक क्लाइंट सर्वर मॉडल रो एग्जांपल हे परिबो दैट इज ईमेल सर्विस ऑप्शन सी ईमेल सर्विस इज योर राइट आंसर व्हाट डज ओएसआई स्टैंड फॉर ओएसआई गोटे मॉडल जाको रेफरेंस मॉडल भाବରେ नेटवर्किंग क्षेत्र रे व्यवहार करा जाय ओएसआई होची ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ऑप्शन बी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द ओएसआई मॉडल ओएसआई मॉडल रे केतोटी लेयर रहिछि एतरे 7टी लेयर रहिछि ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर which is the topmost layer in the OSI model OSI model थिबा topmost layer होची application layer option B application layer is your right answer what is the main function of the presentation layer कोन presentation layer रो मुख्य काम कोन presentation layer रो मुख्य काम होची data formatting and encryption and decryption करैबो option C is your right answer next which layer of the OSI model is responsible for session management session management karaibo session layer option C is your right answer next the transport layer in the OSI model ensures OSI model रे थिबा transport layer कोन ensure करिवो reliable and accurate data ताकू कोन करिवो से delivery करिवो option C हबो right answer next which OSI layer deals with IP addressing and routing IP addressing and routing रो काम होची network layer IP आसिला internet protocol रो addressing next MAC address MAC माने होची media access control and ignorizing are done at that is data link layer option B have right answer conversion of bits into signals is done at which OSI layer that is physical layer option D physical layer is your right answer which addressing method is software based and logical software based and logical hoji that is IP address option B IP address is your right answer what is multiplexing in data communication रे multiplexing कोन एटा that is होची आपनकर combining multiple signals over a single path option A हो यार right answer next question what is the purpose of CDMA CDMA रो पर्पस कोन हो कोंतु CDMA रो पर्पस होची spread spectrum multiple access technique option C have right answer next question pocket switching data is broken into pockets आपनकर जो pocket switching रे data गोटे pockets रे broken हो ठीक अछि data गोटे pocket रो form रे broken हुए next PSTN is mainly used for telephone communication. Option B that is telephone communication have your right answer. Next, which network type combines circuit and pocket switching with digital transmission rate? Which network type combines circuit and pocket switching with digital transmission have that is ISDN. Mone rakhantu. Option C ISDN is your right answer. Next, which technology is used in Ethernet रो LAN रे? Ethernet रो LAN रे क्यों technology को use करा जाए? That is BOSH technology. Option C is your right answer. What is the standard data rate of traditional Ethernet रे? Okay, traditional Ethernet रे standard data rate थिला that is 10 Mbps. Option B 10 Mbps is your right answer. What is a token in networking गोटे networking क्षेत्र रे what is token गोटे token होची a small message passed for data control option B is your right answer next question number 51 who is known as the father of the internet रो जनक काहाकू जाना जाय internet रो जनक होचंती विंट शाह option C is your right answer what does that term internet stand for internet रो full form कोन आसीबो that is interconnected network होची आपनकर internet next question what was the first operational pocket switching network कोंतु first operational pocket switching network होची आपनकर ARPANET is your right answer next question
which of these is not a broadband technology? निम्नोक्त मध्यरु कोउटा एक broadband रो technology हबो नै, that is हबो dial up. Dial up गोटे broadband रो एक technology नुह. Next, what is intranet कोन हबो? Okay, we know internet, but what is intranet? Intranet होची गोटे private network within an organization. Option B is your right answer. Next, what is a podcast? But a podcast कौन है परिबो? Podcast होची a form of audio broadcasting on the web. That is called podcast. Audio broadcasting रो गोटे series को we can say podcast. Next, what is a protocol in networking? Gote networking क्षेत्र रे protocol कौन? Protocol होची a set of rules for data communication. Option B have right answer. Next, what does TCP and IP stand for? We know TCP and IP कौन? That is transmission control protocol and internet protocol. ए दुईटा होची आपनकर कौन? गोटे working model अटे networking क्षेत्र रे. Which protocol is responsible for addressing and dispatching packets? That is हबो आपनकर IP address. Internet protocol रो address. What is the size of an IP address in IP version 4? IP version 4 32 bits रहो. 32 bit is your right answer. Next, what does FTP stand for? FTP stand for file transfer protocol. Option B is your right answer. Next question, which protocol is used to transfer web pages? Web pages को transfer करिया पे क्यों protocol को use करा जाए? HTTP रो protocol को use करा जाए. Next, which protocol is used for sending emails? Emails को send करिया पे SMTP simple mail transfer रो protocol को use करा जाए. What does WAP stand for? WAP stands for wireless application protocol. Option C is your right answer. VoIP is used for VoIP होची voice communication over the internet. Option C is your right answer. When was the World Wide Web introduced? देखो WWW को है देखो introduce करा जाइतला 1989. Option C. Then introduced by whom? आपन comment section रे जणाइबे. Next, what is the main page of a website called? गोटे website रो मुख्य पेज को कहजिबो home page. कोन कहजिबो? Home page. Next, what is hyperlink? Hyperlink का कहजे? Hyperlink होची a clickable text linking to another document. Option C is your right answer. Next, what does a web browser do? गोटे web browser रो काम कोन? That locates and display the web रो content को आपण through web browser जरिया रे search करि परिबे and use करि परिबे. Next, a web server does what? गोटे web server रो काम कोन? Host करिवो and deliver करिवो, that is web pages को. Option C is your right answer. Next, what is a cookie in web browsing? गोटे web browsing क्षेत्र रे cookie रो काम कोन? Cookie होचे एक small message store user रो information like user data को से store करिवो. Next question, what does URL stand for? URL कौन? URL होची गोटे address, uniform resource locator. Option C is your right answer. What is the function of DNS? DNS रो function होची convert domain name को IP address, means internet protocol रो address रे से convert करिवो, that is DNS, domain name system. Which domain is used for commercial website? Which domain is used for commercial website? That is .com. Option C is your right answer. What country code does .in represent? .in ta represent करूची India को. Option B, India is your right answer. What is a blog? Blog होची आपनकर a regularly update website with post. Option C is your right answer. What is a search engine used for? Search engine को use करा जाए finding websites and content online. Option B have a right answer. Which of the following is an example of an online text or multimedia conversation? Online text and multimedia conversation पाई, that is आपनकर chatting को है. Chatting is your right answer. What is required to use email? Email को use करिया पे आपनको email address कोटे required आटे. What is the storage area for email message called? Email message रो storage area को कौन कहते? Mailbox कहते. Option B, mailbox is your right answer. What does m-commerce stand for? M-commerce stand for mobile commerce. Option C is your right answer. What is EDI in e-commerce? E-commerce रे EDI रो full form होची electronic data interchange. Next, e-commerce means e-commerce रो अर्थ होची buying and selling over the internet. इंटरनेट रे किना बिका करिया को ई-कॉमर्स कहै छै. What are
hashtags used for on Instagram रे जो hashtags को use करा जाए, that is indexing and making post searchable करिया पाई hashtag को use करा जाए. Next, Instagram was acquired by which company? या को Facebook द्वारा acquire करा जाइए. Facebook रो मालिकाना रे Instagram कौन करूची गोटे social media platform run करूची. Next, who founded Facebook? Facebook को किए प्रतिष्ठा करथिले? यार फाउंडर होचंती मार्क जुकरबर्ग. ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर. Which of the following is a business oriented social network? Business oriented social network which is LinkedIn. Option C, LinkedIn is your right answer. What is e-reservation used for? E-reservation is used for booking tickets, hotels rooms on online जरिया. Option B है right answer. E-banking is also known as e-banking था आपनकर internet और जाको online banking कहते हैं. Option C is your right answer. Who developed Zoom? Zoom को किए develop करथिला? Zoom video communication द्वारा Zoom को develop करा जाइए. Next question, what is the maximum number of participants allowed in a free Zoom meeting? What a free Zoom meeting रे 100 people participate करी परिबे. Next question, Microsoft Teams is primarily designed for business communication पाई Microsoft Teams को डिजाइन करा जाइए. Which function in MS Excel tells how many numeric entries are there? Only numeric विषय जदि कथा बा, that is count function. The special program that translates code written in a programming language to machine code habo, that is compiler. Compiler kamo translate karibo machine code re. Windows operating system secures system objects including file, registry setting and kernel object using access control list. Option B is your right answer. While working on a Microsoft Word document, pressing the F7 key will open up the spelling and grammar dialog box to open habo. In Microsoft Excel, option to import data from text or CSV file are grouped under the desktop, that is data tab under asijibo. Which of the following is used to design and develop the web pages? Design kariba and develop kariba pai gote web pages को Dreamweaver buchi gote software or gote tools we can say. Next, which among the following option is the bottommost layer in the OSI model? Open system interconnection model ro bottom layer hochi physical layer. Okay, as the last question, question number 100. S is firmware used to perform hardware initialization during the booting process. Booting process kono jemiti power on, startup, and to provide runtime service for operating systems and programs, that is apanakar BIOS. BIOS kono basic input and output system. Option C hobo right answer. Clear? So eha thila apanakar 100 questions out of 100 आपण केतोटी प्रश्न करि परछन्ते आपण कमेंट सेक्शन रे जणाई परिबे एवं आपण एही नोट्स टिकु वीडियो डिस्क्रिप्शन रे थिबा एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल रो डाउनलोड करि परिबे. आई होप ए क्लास टी आपण मानक पे बहुत यूजफुल हो. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास.